A very good morning, class. So up till now we have finished two chapters of our secretarial practice subject. That is, one was we saw what was the meaning of secretary, and the second we studied about various types of business organization that has been involved since industrial revolution took place. And we also study about joint stock company, what are its features, what are the different types of company, what is exactly a company, we saw in a previous chapter. Now today, before I move on to the next topic, for the next new chapter of our secretarial practice syllabus, I want you all to observe this particular image and see what do you understand by looking at this particular image. Okay, so observe this picture very carefully. There is a lady over here who is expecting a child. After some time period, she gives birth to a child and she is really very happy. So I hope the picture is very clear to you all. Now, why I am showing this image, what could be the reason? Class, observe this image. What do you understand? So in the first peak there is a meeting kind of thing, and you can see big buildings around, and this slide you can see this business law. Okay, so can I say this particular thing come in existence when it is registered by following the procedure laid down by the Companies Act 2013. What could it be? So this is a picture represent the business law is a lady which you saw in a previous image. After a certain period of time, lady feels happy and she is holding a child. That child could be this particular image you can see on the left hand side. Okay, the hint I gave you all is this particular things come in existence when it is registered by following procedures by the Companies Act 2013. So can you guess what I am talking about? Correct. We are talking about formation of company. How does a company come into existence? Like everyone of us who come into this world by taking a birth from our mother. In the similar manner, the mother of the company is none other than the business law. So business law is a parent of the particular company. Formation of company can be defined as a registering or incorporating a company with the registered office of the companies in a state where the company's registered office located. Okay, so class, I hope you all followed. We are starting the next chapter of our syllabus of secretarial practice, that is chapter number 3, and the name of the chapter is none other than formation of a company. Okay, so the formation of company is and I hope all are clear with the meaning आपको clear है, ठीक है. So formation of company is nothing but registering or incorporating the company with our ROC, that is register of company. And who is ROC? He is the person who is given authority by the law to register the company and bring them into the world. So for example, you can take the authority to bring child in the world is given to the God, to the parent, and to the doctor who help in making delivery safe and possible for the both mother and the child. So similarly, to bring company into existence, who is given the authority? The ROC. Okay, that is register of company. He is the person, he is the institution, he will be responsible to bring the company into existence. So class, please pay attention to the word ROC because this will be coming into
coming in number of time from the chapter here on. Okay, so who is ROC class? He is the one who is giving authority by the law legally to register all the companies, and after he will register the companies and then only the companies come into existence. जब तक वो रजिस्टर नहीं करेंगे, इनकॉर्पोरेटेड नहीं करेंगे, कंपनी एग्जिस्ट नहीं होने वाली. सो अगर कंपनी को एग्जिस्ट करना है तो दे हैव टू गो टू द प्रोसीजर, टू द ROC, that is register of company, to register their company and then legally the company will exist. Now based on minimum number of promoters, the company can be found of three types. That is, number one, a public company. This we had already seen in a previous chapter. So minimum 7 promoters or a person are required for this. Then the next type of company which can be formed is private company, and for these minimum 2 promoters or persons are required. And then the third type of company can be formed on the basis of one person company. For this minimum 1 promoter or 1 person is required. So this is one type of company which can be formed on the basis of number of promoters or a members of that particular कंपनी. मतलब ये किसके बेसिस पे है? तो प्रमोटर्स यानी क्या? तो मेंबर्स, कंपनी की जो मेंबर्स होते हैं. ठीक है, मेंबर्स यानी शेयर होल्डर. लेकिन जिस शेयर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में रजिस्टर हो जाता है, ठीक है, जैसे आपका नाम कैटलॉग में आ गया, यानी आप इस कॉलेज के में क्या हो गए हो? एडमिट हो गए हो. ठीक है, मतलब आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपकी प्रेजेंट ही हो रही है. वैसे ही कंपनी के मेंबर्स का, प्रमोटर्स का एक रजिस्टर होता है, उसके अंदर कंपनी के शेयर होल्डर के नाम जब आ जाते हैं उस रजिस्टर के अंदर, तो उन्हें बोला जाता है मेंबर्स यानी प्रमोटर्स. तो ऐसे मेंबर्स के बेसिस पे कंपनी क्या हुई है? तो बेस्ड है. तो इन अ पब्लिक कंपनी, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी देयर आर मिनिमम 7 promoters. इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर आर मिनिमम 2 promoters एंड 1 person कंपनी. देखो नाम में ही है 1 person यानी कितने मेंबर्स होने चाहिए? मिनिमम 1 person, यानी यहाँ पे 1 man शो है. ओके, यानी एक ही पर्सन रहता है, एक ही मेंबर रहता है. सो बेस्ड ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर मनी वाइज. ओके, तो अभी किसके ऊपर है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर है. The company may be registered as under the section 3 subsection 2 as company limited by shares. Okay, we already saw in the meaning in the previous topic, that is the limited liability of all the members of this type of company is limited. यानी liability जो है, अभी आप बोलोगे कि liability मतलब क्या मैडम? ठीक है, तो अभी बीके अपना स्टार्ट हो गया है लेक्चर, आपको असेट्स एंड लायबिलिटी साइड्स अभी आ रही है. ठीक है, सो लायबिलिटी मतलब क्या? फॉर एग्जांपल मैंने किसी का पेन लिया हुआ है. ठीक है, मुझे कुछ लिखना था, मेरे पास पेन नहीं था, तो मैंने किसी का पेन बोरो किया और मैंने उससे लिखा. तो मैं वो पेन मेरे पास रख के वापस चली जाऊंगी क्या? नहीं. तो वो पेन मुझे क्या करना है? तो रिटर्न करना है. सो इट्स माई लायबिलिटी. अगर मैं कोई चीज़ किसी से ले रही हूँ लेकिन वो चीज़ मेरी नहीं है, जैसे और एग्जांपल, हम दोनों फ्रेंड्स है, दोनों फ्रेंड है, एक्स एंड वाई दोनों फ्रेंड है. ठीक है, तो वाई कहीं पे बाहर घूमने जा रहा है, लेकिन वाई के पास एक गाड़ी है, कार है. तो वो बोलेगा कि अरे मेरी कार घर के सामने खड़ी रहेगी, खुले में रहेगी, उससे बेटर है मैं तेरे घर के सामने वो क्या कर दूंगा? पार्क कर दूंगा. मैं 10 दिन के लिए घर पे नहीं. तो वो कार क्या एक्स की हो जाएगी क्या? नहीं. वो कार किसकी है? वाई की है. वाई जब वापस आएगा, एक्स वो कार उसे क्या कर देगा? वापस लौटा देगा. यानी तब तक के लिए, वो 10 दिन के लिए, वो 10 दिन के टाइम पीरियड के लिए वो कार एक्स के लिए क्या है? लायबिलिटी है. लायबिलिटी यानी क्या? जो चीज़ मैंने किसी से मांगी हुई है और जो मुझे क्या करनी है? इन फ्यूचर रिटर्न करनी है, ऐसी चीज़ों को क्या बोला जाता है? लायबिलिटी. Okay, so to the unpaid part of the face value of the shares held by the shareholders. For example, if a person is holding 10 shares of 10 rupees each,
So how much will be the liability of the person is 100 rupees. 10 into 10 100. Okay, so 100 रुपये के 100 रुपये से 1 रुपया भी ज़्यादा वो पे नहीं करेगा, बिकॉज हिज लाइबिलिटी इज लिमिटेड. लिमिटेड यानी क्या, तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, उसके ऊपर लिमिटेशंस है. जितना वो पेएबल रहेगा कंपनी के लिए उतनी ही वैल्यू शेयर होल्डर कंपनी को क्या करने वाला है, तो पे करने वाला है. ओके, सो द सेकेंड टाइप ऑफ कंपनी इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, वेयर इन the members of this particular company is guaranteed to pay certain amount either to the assets of the company at the time of winding up of the company or towards the cost of winding up of the company. मतलब क्या, so all the shareholders guarantees or promises that they gonna pay a certain amount of money during the wind up. मतलब बंद होने वाली है कंपनी, जब बंद होगी कंपनी एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी एज अ शेयर होल्डर विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ सर्टन अमाउंट. मतलब जब कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, तो पहले केस में क्या था, तो लाइबिलिटी लिमिटेड ही है. लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एज अ शेयर होल्डर हम कंपनी को क्या दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि जब कंपनी बंद होगी, ठीक है, हम इतना इतना अमाउंट कंपनी को क्या करेंगे, पे करेंगे एज अ शेयर होल्डर. उसे बोला जाता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. ओके, एंड द थर्ड टाइप इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, विच a very well clear with that is the liability of all the member is unlimited. Unlimited यानी यहाँ पे limitations नहीं है. To the exact already extent the liability is unlimited, that is members are responsible for the whole amount of the company's debts and liabilities. मतलब क्या, तो कंपनी बंद हो रही है लेकिन कंपनी का दिवाला निकल चुका है, कंपनी पूरी की पूरी लॉस में जा रही है, कंपनी को बहुत सारे पैसे क्या करने हैं, उनके जिनसे उन्होंने पैसे लिए हैं वो पैसे उन्हें क्या करने, वापस पे करने हैं, रीपे करने हैं. लेकिन कंपनी के पास पैसे नहीं है, कंपनी कंगाल हो गई है, कंपनी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, इसके लिए कंपनी क्या हो रही है, बंद हो रही है. इन दैट केस मतलब क्या, कंपनी को अगर किसी को पैसा देना है तो अगर कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो इन दिस केस तो क्या होगा, तो कंपनी के जो डेब्ट्स है, कंपनी का जो कर्जा है वो पे करने के लिए उन्हें उनके शेयर होल्डर्स को क्या करने पड़ेंगे, खुद के पैसे भी उन्हें क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे एग्रीमेंट में क्या है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. Okay, so these are the three types of company on basis of capital structure, that is the money which is contributed by the shareholders. So up till now the formation part of the company is clear. Okay, so now please observe this particular image class. In order to give a birth to a child, as you all know, it requires 9 months, and these 9 months is divided into a period of trimester. In the similar manner class, the formation of a company, the existence of the company, the company registration of a company passes through a 3 stages. company जैसे अगर किसी को मतलब क्या है, तो बच्चे को जब जन्म देना है तो उसके लिए 9 मंथ्स लगते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या किया है, तो फर्स्ट ट्राइमिस्टर, सेकेंड ट्राइमिस्टर, थर्ड ट्राइमिस्टर और फोर्थ ट्राइमिस्टर में क्या है, तो बर्थ है बेबी का, ठीक है. इन दैट सिमिलर मैनर कंपनी की फॉर्मेशन के लिए भी क्या है, तो देयर आर 3 स्टेजेस. कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने के लिए the company has to pass on through the 3 stages. So that is why the next topic that we are moving on to is called as the stages in the formation of the company. Okay, how does the company come into the existence? So there are 3 stages. First stage, promotion. A company's beginning
टू फॉर्म, मतलब ये सबसे पहला स्टेज है जहाँ पे कंपनी क्या होती है, तो फॉर्मेशन उसका क्या होने वाला होता है, स्टार्ट होने वाला होता है. द सेकेंड स्टेज इज बी, incorporation of company, that is registration of the company and following all the legal procedures as per the Companies Act 2013. And the last stage is C, commencement of business. So once all the legal formalities are over, then the company can commence or start the business. Okay, so I hope you all are clear with the topic up till now. So don't worry class, we will be learning all these 3 stages in detail in the next lecture. So today it is just a introductory part of the lecture which you have to be clear with. Okay, so now before I wind up the topic, some important points as per the Companies Act C section 3(1). The following conditions must be fulfilled for the formation of the company. If you all are planning to start a company or form a company, then the following conditions must be satisfied. And what are those conditions? So first one, so there are basically 4 conditions given in your textbook regarding the formation of a company. So let's see what are those conditions. First, the company shall be formed for any lawful purpose. That means you will do the business legally and there will be no illegal business. For such kind of business will not be conducted which is not permitted by a लॉ. यानी जो भी काम करो, जो भी बिजनेस करो, इट शुड बी लॉफुल लीगल बिजनेस होना चाहिए. ओके, इनलीगल बिजनेस के लिए लॉ अगर परमिशन दे रहा है, जैसे देखो हम लोग दवाई वगैरह खाते हैं, दवाई को पता है क्या बोला जाता है, ड्रग्स. ओके, सो यानी दवाई का प्रोडक्शन करना. लेकिन आप बोलोगे अरे बोईसर में तो MIDC में कितनी सारी कंपनीज है, वो तो मतलब क्या है, तो वो है बाबा, मतलब काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, पैसा कमा रही है. तो आप बोलोगे अरे मैडम वो तो कहाँ कमा रही है पैसा, वो कैसे लॉफुल बिजनेस हो गया, ड्रग्स बनाते हैं. तो उनको गवर्नमेंट ने क्या दिया है, लॉ ने उन्हें वो क्या दी है, परमिशन दी हुई है. ओके, तो अगर लॉ अगर आपको परमिशन दे रहा है, आपका बिजनेस अगर लॉफुल है, दवाई यानी क्या, तो ऐसा ही नहीं कि ड्रग्स एज अ ड्रग्स मतलब क्या, तो वो ड्रग्स है पता है, लेकिन वो एज अ मेडिसिन भी क्या करती है, तो काम करती है. उनका डोज होता है, प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, डॉक्टर जैसे बोलेंगे हम उस हिसाब से लेते हैं. या जाओ मेडिकल में कौन सी भी दवाई लेके आओ, उठा लो और खा लो, ऐसा नहीं होता. सो ऑल द बिजनेस एक्टिविटी शुड बी लीगल एंड लॉफुल पर्पस के थ्रू होनी चाहिए. नेक्स्ट वन, if you all are planning to form any of the 3 type of company which we saw, then in a case of public company minimum 7 members, 7 promoters will be required. In case of private company minimum 2 promoters will be required. In case of 1 person company only 1 person will be required. और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आपको मैच द कॉलम, आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस है, ट्रू और फॉल्स है या चूज द करेक्ट ऑप्शन है, इसमें ये सारे क्वेश्चंस, ये सारा पॉइंट आपको क्या कहे जाएंगे, पूछे जाएंगे. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. पब्लिक कंपनी 7 मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स एंड 1 पर्सन कंपनी 1 मेंबर. ठीक है. Number 3, the third type, all the promoter must subscribe their name to the MOA. Now class, in the previous lecture you get some information about AOA. AOA यानी Articles of Association. Now this is the very first document, MOA. So there are 2 important documents of the company that is called as a MOA and AOA. आप बोलोगे MOA और AOA क्या है, बराबर है. तो मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से, या मैं इन्हें एज अ, ये दोनों भाई बहन हैं. ठीक है, ठीक है. तो मतलब क्या है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. MOA का मतलब क्या है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. और AOA का मतलब क्या है, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ये दोनों क्या है, तो भाई बहन है.
और MOA सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जो सबसे पहले बनाया जाता है. ओके, सो MOA इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट एंड इट shows the purpose of the organization. In short, हम बोल सकते हैं विजन और मिशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी क्यों फॉर्म हो रही है, वाई योर कंपनी इज फॉर्म, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, व्हेन विल बी द कंपनी अचीव the objectives, and to whom the company is targeting, to satisfying to which customers. So MOE is a very first document जिसमें कंपनी की A to Z information will be given. It is that document which shows the aims and objective of the company. So once you have decided which type of company you are gonna open, all the promoter must subscribe their name into the first document of the company, that is memorandum of association of the company. Okay, the promoters must comply with all the provisions of the Companies Act 2013 with respect to incorporation of the company. So all the procedures, जो भी procedure करना है या करने वाले हैं promoters, they must be doing within the guideline of the Companies Act 2013. तो promoter जो कुछ भी activity करने वाले हैं business से related, वो किस हिसाब से होनी चाहिए, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से. ओके, सो क्लास, आई होप so these are the 4 conditions we should be satisfying before formation of the company. So I hope class you all are clear with these particular conditions. So tomorrow we will be focusing on the first stage of formation of the company, that is promotion stage. So till then class, take care, stay safe, keep studying, and if you have any doubt, please let me know. Thank you so much for listening to me.